Okay. So see the last thing in the static query, what we are learning, not in the static, last thing in the query part, because we already have seen what does it means by a static query and a dynamic query. So we will be covering, we have covered everything. Only one thing which was left is like operator. I told you in the last lecture that you must not get confused with in and like, because these are not clauses. In is also an operator in what we have learned in the last lecture. In wherever you use in, always remember this, in is an operator. At the same time, the second operator is what? Like operator. Okay. Now let's complete this so that I could start a new concept with the relationship query. Or after that, we are going to start with the DML statements. Anyways, see, like operator. Okay, what is like? What is the purpose of using this? Let me take you to the developer console, and I'll first execute and query, and we will see like what exactly is the purpose of using like operator. Now here, see. If I go to the query editor and I design a query in such a way that like select, for example, ID and the name and probably rating and probably, the active status, active underscore C and probably industry. I wanted all this to be get fresh from the account where name precisely should equals to. Now, for example, I'll go with mark. Okay, let's see what happen when this query is going to be get executed. So I didn't get any result over here because there is no such name with the mark in corporation. So I need to go to the account and let me see. Okay, let me see whether we have the name is Merck Incorporation, rather INC. So if you're trying to fetch this, and if you're trying to fetch this record, you should enter the exact naming. You should enter the exact naming. That's what a difficulty. I mean, instead of writing Merck, if I know the full name, then it's okay. Then I make this and I execute it once again, you get the record. But what was the difficulty if you don't know the record exactly? You just know few of the initials. For example, you wanted to see all those record whose starting name or who's starting with the character, whose name is starting with the character M, A, something like this. Then this query actually won't give you anything because there is no such name with, I mean, single M. There is no such name. Whenever we are writing this kind of query where we are not sure about how the data is, I mean, the name of the record, but just we have an idea. Okay, the name could be start with what? It could be start with any of the character from A to Z or 0 to 9, whatever. So this query won't give you any result because whenever you are typing, whenever you are asking, okay, give me those record with this name, you should precisely type the complete name of the record. You should precisely type the complete name of the record. Then, yeah, then it is possible that query will return you. But if you don't know that kind of thing, query won't return you anything. That's what the difficulty. So here we have in the SQL, we have one of the operator called as like. Take a like. So like will used to fetch, what it is used to get. It used to give the similar kind of records. It used to give the similar kind of record. For example, if you give, I wanted to fetch all those records from the account object whose name probably starting with M, probably starting with A, probably starting with T, something like that. Then you could use like operator. But like operator is, I mean, it's always used with, few of the wildcards. There are two wildcards. One is percentage, the second one is underscore. Percentage means any occurrence, rather than represent zero or more characters, I like to say percentage means any occurrence. Any occurrence means it could be no occurrence as well as some of the occurrence of that character. Now, for example, if I type, like this, M with a percentage, that means just give me all the names, just give me all the names who are having M into this. Okay, M followed by any character. M followed by any character. We are going to see that. Don't worry. If you even partially understand this, so don't worry. I'll covering this into the actual query, so you are going to understand. Now here,
Here, here underscore means only one character. Now, what does this mean? Let me show you that. I have few of the example. Let's try to cover this from here, and then we will, solve this use case. So, if you write down in like where the name like r percentage, where the name like r percentage, then this query will give you what? This query give you what? So it will try to locate all those record whose starting character is r, followed by anything, followed by anything, whose starting character is r, followed by anything. So in that case, now let's consider that we have few of the records in account whose name are this, like Rajesh, Ramesh, Rakesh, Raja, everything. So what's the starting character in every name? R. R. Here also it's R and R. And R followed by anything. R followed by any number of the characters. Could be one, could be even we can suppose कि for example there is a account record whose name itself is R. बस और कुछ भी नहीं. That's also possible. That is also possible. That is also possible. R percentage matlab the first character should be R. That's a compulsory thing. After that percentage, the first character should be R. That's a compulsory thing. We want it. But otherwise it could have anything. Percentage means it could have anything. If I type it like in RAM percentage, then in the starting, the first three characters should be R, A, M, followed by anything. Like Ram space Kumar, Ram, ESH, Ramesh, Ram space Tripathi, something like that. Okay. Now here what we are defining the first character and then we are defining, followed by percentage. Now if I put percentage, that could also possible, this is also one of the possibility that we could put the percentage in front of the name. So I have kept it in front of the name. Here I wanted anything, any number of the character, but it should have at the end it should have Kumar. It should have Kumar. तो परसेंटेज जैसे परसेंटेज मतलब क्या हुआ एनी नंबर मतलब राम इंक्लूडिंग वन वाइट स्पेस दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर फॉलोड बाय कुमार देन सुरेश कुमार पवन कुमार समथिंग लाइक दिस ठीक है एंड ये कब जब आपने परसेंटेज को पहले रखा है परसेंटेज को बाद में रखा है तो वॉट एवर यू हैव रिटन इन द फर्स्ट द वो होना चाहिए बाद में कुछ भी रहे तो भी चलता ठीक है परसेंटेज को पहले रखा है मीन्स यू वांटेड टू हैव एनीथिंग एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग followed by the Kumar only. But at the starting it could be anything. At the starting it could be anything. And if you have put it into two, in the both places, you have put this percentage in the starting of the string as well as in the end of the string. Then it means कि starting में भी कुछ रहे तो भी चलता, ending में कुछ रहे तो भी चलता. But in the middle it should have the word RAM. RAM. तो like राम के पहले क्या है nothing blank space चलता है that is also allowed. है ना उसके बाद कुमार अब यहाँ पे प्रमेश में RAM मिडल में आता है बट बिफोर इट्स हैव PA परसेंटेज मतलब एनीथिंग PA अलाउड उसके बाद MESH दैट्स आल्सो अलाउड so this is what exactly is the use of this query this particular wildcard character now let me try to replace the same query where name where name I'll go with this where name like equals to हटा देते हैं where name like M percentage. Okay. Where name like M percent. Let's see whether it's going to be executed. See. So M percentage means it has given me all those record who are starting with M. Let me try with other possibilities. Do we have? Let me try with this with A. A percentage. So it should have A. The first character should be A, and after that it should have anything. Just give me all those records. See account, ABC, Athena, everything. That's what the thing. Okay. So this is the role of this is the role of percentage. If I put it over here, if I do it like this, okay, in the starting it should have anything. Okay, in the starting it should have anything, but then at the end it should have a something called as T. So now see, starting में कुछ भी रह चलता है, at the end it should have T. So at the end, all those record whose last character is T, it has identified all those things. Okay. If you wanted that, starting should be something, in the middle somewhere it should have T, and ending should be something all. No चलता है, ऐसा भी चलता है. Then give it in the both places. Now there are so many of the records like this.
सो दैट्स व्हाट द यूज ऑफ व्हाट, एक तो लाइक ऑपरेटर और दूसरा आपका ये, ठीक है, परसेंटेज सिंबल, परसेंटेज का जो वाइल्ड कैरेक्टर है। देयर इज वन मोर कैरेक्टर एंड दैट इज अंडरस्कोर, ठीक है ना। अंडरस्कोर विल प्रिसाइसली रिस्ट्रिक्ट यू वन पोजीशन के अंडरस्कोर, मतलब यहाँ पे देयर मस्ट बी ओनली वन कैरेक्टर, देयर मस्ट बी ओनली वन कैरेक्टर, आफ्टर दैट इट शुड बी ए, हाँ, फॉलोड बाय एनीथिंग, ठीक है। तो इफ यू ऑब्जर्व दिस ए, इफ यू ऑब्जर्व दिस ए, ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व दिस ए, हाउ मेनी कैरेक्टर्स इट हैव इन द फ्रंट, ओनली वन कैरेक्टर, ठीक है, एंड एट द एंड इट शुड बी एनीथिंग। Let me design this query in the same way. So I wanted to have first character, I just wanted to have one character. After that, the second character should be T. This is my requirement. Ki first it should have one character. The second character should compulsory be T. After that, it should have anything. Let me go with this. There is no such record. There is no such record. Let me go with this possibility. E. Okay, we are going to get the Merck incorporation also, because in the Merck the first is M, the second is E. ठीक है, जीनी पॉइंट में फर्स्ट इज जी, द सेकंड इज ई, एथीना में फर्स्ट इज ए, द सेकंड इज ई, आफ्टर दैट इट शुड हैव एनीथिंग, ठीक है, लाइक दिस. So where we wanted to restrict this kind of, exactly one character should be there and the second character should be E or something like that, then we actually make the use of underscore. So these are the only two wildcard characters, these are the only two wildcard characters. Okay? So that's what the thing. Now let's try to solve this program. What's this asking? Write an apex program to fetch all the similar kinds of records based on the columns by using the like operator. Okay? Let's do this. So we already have created one of the class with the name database helper. Okay? And what I'm doing, actually I'm trying to make the methods only into that. So I'm opening that class only, database helper. Okay? So we created this class database helper, and then these were the methods that we have created inside this. Now I need to solve one more use case that I wanted. Let me just copy the use case, paste it over here. So I wanted to fetch all similar kinds of records. I wanted to fetch all similar kinds of record based on something, based on the input value what the user is going to provide. Okay. So first of all, let me create the method for this. Public static void. Every method whatever we use is a static method, and because it's a procedure, it doesn't return anything, so it's a void method. So public static void, give any name, for example, get banking accounts. Okay. Where's this? One second. One second. So let's create a method with this name. You could give any name over here. So I'll bring in a void get banking contacts, for example. Okay, with this name I'm creating a method. Okay, with this name I'm creating a method, and okay, so what we wanted to fetch. Why I'm giving this name as to be I don't know why I'm giving this name as to be contact fetch करना है, account fetch करना है. एक बार देख लेता हूँ क्या है क्वेश्चन. similar kinds of account based on अच्छा ठीक है. Get banking contacts we already have developed. Let me do change the name to be search account records. Okay, so this will be my method. This will be my method. Now see what we want कि यहाँ पे हम यूजर को बोलेंगे कि आपको एक स्ट्रिंग एंटर करो, and based on whatever user has entered,
based on whatever the user has entered, we will be searching that record. तो because वो एक string एक character enter करेगा ना, we must supply that provision कि हम उसको accept कर पाए, जैसा हमने यहाँ पे किया था, string search text. So I'm actually going with the same logic. So this kind of procedures, they are called as parameterized procedures, जिसमें parameters होते हैं ना. Parameters could have any number of parameters. कोई जरूरी नहीं कि it should have only one parameter. No. It could have any number of the parameters. This kind of procedures are called as parameterized procedure. So whenever this procedure will execute, it will ask user to enter a string value, and based on that string value we are going to search the record. तो देखो यहाँ पे ये बहुत मैंडेटरी है कि यूजर ने सर्च टेक्स्ट में कुछ वैल्यू देनी चाहिए, है ना. तो दिस सर्च टेक्स्ट shouldn't be empty and null. So before we actually start the program, even here also probably we have done the same thing. And I told you as in best practices, whenever you are asking the user that you should give some values, because based on that value we have all internal logic is based on this value of the search text. है ना. So that's why we should always check for this whether the search text should not equals to null and not equals to empty. That's what the thing, and this is one of the best practice. Okay, whenever you ask an user that you should give some value, because my whole program depends on whatever the value is coming from here, this value should compulsorily be not null and not equals to empty. User must supply something. If user won't supply anything, I cannot provide anything. I cannot give any result. That's why as a best practice, your program must have this provision. If user doesn't supply anything, then your program logic shouldn't be get executed. तो ये बहुत जरूरी है क्लाउड कंप्यूटिंग में ना, ये सब चीजें बहुत मैंडेटरी होती है, because we simply don't wanted to waste the resources at any cost. If user has supplied the search tag, then okay, fine, we are going to, what we will do, we will find the related account record based on the value of what? Based on the value of search text. But if user doesn't supply anything, then we are not going to do this. है ना. अगर यूजर ने null किया इसको, then we will simply move out of the program and it won't execute anything. You even don't require to write a system.debug. आप चलो लिख सकते हो, no problem in that, but that message will going to display only onto the console. ठीक है, तो वो भी even लिखने की जरूरत नहीं है अपने को. But my whole logic depends कि user must enter something, and that's the reason we will do this. So these are some of the best practices I always told you. ठीक है. सो नाउ कंसीडर के यूजर ने कुछ तो भी एंटर किया है. ठीक है, यूजर ने कुछ तो भी एंटर किया है. ही हैज एंटर समथिंग इन द सर्च टेक्स्ट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर एक चीज करता हूँ. सर्च टेक्स्ट की जो वैल्यू है ना, इसमें प्लस इक्वल्स टू आई एम अपेंडिंग वन वाइल्ड कार्ड जो अभी आपको पढ़ा है, एंड दैट इज परसेंटेज. मतलब सर्च टेक्स्ट में अगर यूजर ने एंटर किया फॉर एग्जाम्पल कासिम, लेट्स टेक दिस एन एग्जाम्पल, या मर्क, तो मैं मर्क के आखिरी में प्लस इक्वल्स टू मतलब अपेंड करना. प्लस इक्वल्स टू मतलब क्या होता है, अपेंड करना. उसके आखिरी में एक कैरेक्टर लगा रहा हूं मैं. वो कैरेक्टर कौन सा है मेरा, परसेंटेज. कि मर्क परसेंटेज, यानी स्टार्टिंग मर्क होना चाहिए, आखिरी में कुछ भी रहे. अगर सर्च टेक्स्ट में यूजर ने एंटर किया के, तो स्टार्टिंग कैरेक्टर के हो, उसके आखिरी में प्लस इक्वल्स टू मतलब एट द एंड व्हाट शुड बी अपेंडेड. एट द एंड उसमें क्या चिपक जाना चाहिए, परसेंटेज चिपक जाना चाहिए एट द एंड. है नो. दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस. अगर मेरे को ये और मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये पहले लगाना भी होता तो आई विल डू इट लाइक दिस, ऐसा करता था. बट ऐसा नहीं है, आई वांटेड दिस टू बी गेट अपेंडेड एट द लास्ट. ठीक है, सो आई एम गोइंग विद दिस. ओके, चलो नाउ दिस, लेट्स नाउ कॉल द क्वेरी. अब हम क्वेरी बनाते हैं. ठीक है, सो माय क्वेरी इज लाइक select the fields like id and then name and then probably rating also and then industry. ठीक है, annual revenue, REVENUE, yes, annual revenue, and like active status, active underscore c, double underscore, because it's a custom field. Where we wanted to fetch this all, from the account. ठीक है, where we wanted to fetch this whole information from which object, we wanted to fetch this from account. Do we want everything? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. We have a condition. We wanted to fetch everything. नहीं. There's a condition. What is that condition? Where what?
where the name, जिसका name should like what, ये जो आप स्ट्रिंग सर्च टेक्स्ट दे रहे हो, तो सर्च टेक्स्ट बिकॉज डायनामिक है, तो डायनामिक असाइनमेंट, every dynamic assignment will always be entered in the query with the help of colon. Yes, I already have told you this. तो नेम शुड बी व्हाट, सर्च टेक्स्ट, नेम शुड बी सर्च टेक्स्ट, और सर्च टेक्स्ट में मैंने एक चीज पहले ही अपेंड कर रखी है, और वो क्या है, परसेंटेज। तो अगर यूजर ने के एंटर किया है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो फ्रेश वैल्यू आएगी, फ्रेश वैल्यू में क्या रहेगा, के परसेंटेज। एम एंटर किया तो एम परसेंटेज, और वो एम परसेंटेज का वैल्यू यहां पर आता है सर्च टेक्स्ट में, ठीक है। सो आई वांटेड यू टू गिव मी ऑल दोज रिकॉर्ड्स whose value is search text appended by percentage, ठीक है। now we always assume that query will return you the multiple values है, तो हम हमेशा कहाँ कलेक्ट करते हैं उसको, we always collect it inside the list collection, list of what, because this query is fired on the account object, and that's why it should be list of account, ठीक है, list of account। now give any name, for example LSTACC, I'm giving this name, ठीक है, LSTACC, you could give any name for that, so I'm giving this name for my collection, LSTACC, ठीक है। चलो, तो this query uh, this query will precisely return all those account records where name looks like this, so whatever the user is going to be entered, that will be appended with percentage, and percentage के साथ में वो आपको print करके दे देगा। now let's print the record, so for dynamic अपना enhance for loop, from where we wanted to print every record, for example ये query ने हमको 30 records दिया है, तो all 30 records are now there into this collection, तो I wanted to print every record, get and print every record from this, तो यहाँ से एक एक रिकॉर्ड निकाल के दो, तो हर रिकॉर्ड जो यहाँ से आ रहा है उसका टाइप क्या है, अकाउंट, उसका टाइप क्या है, अकाउंट, सो आई एम गिविंग अकाउंट एंड गिव एनी नेम, ACC, ठीक है, गिव एनी ऑब्जेक्ट, एनी इंस्टेंस नेम, ACC, व्हाट यू वांटेड टू प्रिंट, सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है, system.debug, the account record equals to plus the value of ACC. That's what the thing. So let's save the program and let's execute this. Do we have any error? No, we don't have any error. So what's the name of method? Search account record. Let me go with copying this database helper. Database dot helper dot search account records, ठीक है, this is my method. So you should see if the method is asking you to enter a string value, the string value should always be followed within the single quote. Now for example I am entering m, ठीक है, m, open log and execute, open log and execute, so here it give you all those values like Merck Incorporation, ठीक है, name and everything. Let me try this with any other data, for example let's try this with A, execute. So if you wanted to see how much records query has written, you could even go with like this, number of the query rows kitni hai, kitni fetch hui hai, 4 out of how many, 50,000 record. That's we have understood this. How many SQL queries in a single transaction, you could fire 100. How much record you could fetch with one query, 50,000. How much DML statement you could fire, 150. How much records that you could fetch with the DML is 10,000. How many SOSL, what we are learning, after that, SOSL, you can fire up to 20 SOSL queries, okay, that's what the thing. So we have fired so these are the record that is being fetched from the queries, all those record who's having A in the starting and then followed by anything, A in the starting followed by anything, that's one thing, okay. So this is the use of like operator, this is what the use of like operator, okay. So go with this program and what is the next? After this, we have few of the examples. I have few of the examples for you to have the practice. Okay. One small thing, one small thing. Let me just copy this code and I'll take up it over here. यहाँ से मैं explain करके देता हूँ. Let me copy the same thing. Now see about this program first of all. How does this program will execute? There's a function called as count function. Okay. Whenever you wanted to get the values, how many records are there into any of the object, how many records are there into any of the object, then this function is used, select count.
ठीक है. So count basically is a function. This is also one of the things we used to incorporate in the SQL queries. तो queries में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया. क्वेरी में मैंने आपको पढ़ाया है पहले तो क्वेरी का फॉर्मेट. ठीक है. सिलेक्ट फ्रॉम. उसके बाद में क्लॉजेस सारी कवर किया. उसके बाद में ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर. एक चीज और थी, एक फंक्शन यूज होता है. और इन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर में जो दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर, दैट इज ऑल्सो वी हैव कवर्ड. ठीक है. एक आखिरी चीज जो बचती है इसमें वो होता है काउंट फंक्शन. सो बेसिकली काउंट फंक्शन क्या करता है. काउंट फंक्शन विल गिव यू हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर इनटू दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है. हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर इनटू दैट ऑब्जेक्ट. नाउ सी, if I fire this query, select count from the account, select count from the account, then it will do what? It will go and look into the account that how many records are there, और वो उसका count यहाँ पे देगा. And that count we have stored it into, we define one integer, of course integer. क्यों integer? Because ये count है. काउंट मतलब रिकॉर्ड ऑफ काउंट, जैसे कि कितने रिकॉर्ड्स है, तो प्रोबेबली इफ आई सी देयर आर 35 रिकॉर्ड्स, तो काउंट की वैल्यू क्या है? 35. नाउ यू योरसेल्फ कुड अंडरस्टैंड कि 35 जो वैल्यू है किस टाइप्स का डेटा टाइप क्या है. इसका डेटा टाइप है इंटीजर. तो वेन एवर वी फायर दिस क्वेरी, तो इसका रिटर्न टाइप लिस्ट कलेक्शन नहीं हो सकता. ऑफ कोर्स नहीं हो सकता. व्हाई? बिकॉज हियर यू आर आस्किंग द क्वेरी टू रिटर्न अ इंटीजर वैल्यू. काउंट, काउंट इज एन इंटीजर वैल्यू. दैट्स व्हाई वी शुड डिफाइन एन इंटीजर वेरिएबल. तो रिकॉर्ड काउंट्स नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया और ये क्वेरी का जो रिजल्ट है वो वहां पे स्टोर किया, उसको प्रिंट किया. अभी दिखाता हूं मैं. अब द सेम प्रोग्राम इफ आई वांटेड टू एग्जीक्यूट इन द डायनामिक क्वेरी, तो डायनामिक क्वेरीज क्या होती है? डायनामिक क्वेरीज आर ऑलवेज स्टोर्ड इनसाइड द स्ट्रिंग वेरिएबल. तो आपने अकाउंट्स क्वेरी नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, एंड सेम सेम क्वेरी, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम द अकाउंट, उसको सिंगल कोट्स में ले लिया. Static query is always, inside this square bracket. Your dynamic queries are there into the single quote. First of all, you need to define a string variable and store the entire query. हाँ भैया, 2 मिनट आया. हाँ 2 मिनट आया, 2 मिनट आया. मैं बाहर हूँ, बाहर हूँ. तो यू नीड टू यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ क्वेरी एंड स्टोर इट इनसाइड लाइक दिस. ठीक है. उसके बाद में अब स्टैटिक क्वेरी विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली. देखो यहाँ पे यही तो डिफरेंस होता है. आई व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो व्हाट आई हैव डन, क्लास नेम डॉट मेथड नेम. ठीक है. क्लास नेम डॉट मेथड नेम. Inside the method name was like search account. Inside the method, we have written one static query. It's going to be get executed automatically. When this method is going to be get called, जब ये method call होगी, this query will automatically get executed. And this is the difference. Dynamic SQL query में यही तो difference होता है कि you cannot, this dynamic SQL queries cannot be executed automatically. We need to call it inside the method database dot query. database dot query method के अंदर अपने को इसको कॉल करना पड़ता है. ठीक है. तो डेटाबेस डॉट क्वेरी, तो काउंट क्वेरी मत लिखो आप, डायरेक्टली आप क्वेरी लिख सकते हो यहाँ पे, और कुछ नहीं है. तो वी नीड टू एग्जीक्यूट दिस अकाउंट्स क्वेरी. तो डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड जो होती है हमारी, उसके अंदर वी आर गोइंग टू गिव दिस. तो दैट्स गोइंग टू गिव द रिटर्न द रिजल्ट, और वो यहाँ पे हम स्टोर करते हैं. सो दिस इज हाउ दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी गेट एग्जीक्यूटेड. इसको थोड़ा सा भी मैं कमेंट आउट करता हूँ, इससे रिजल्ट आपको बताता हूँ. नंबर ऑफ एसक्यूएल साइकिल्स एंड फ्यू मोर थिंग्स. कि कितनी कितनी क्वेरीज एग्जीक्यूट हुई है ना. जैसे मैंने कहा कितनी क्वेरीज एग्जीक्यूट हुई है. तो इफ यू वांटेड टू सी, तो वन वे इज टू डू इट लाइक कि ना, आपको यहाँ जाना पड़ेगा. यहाँ जाने के बाद में यू विल सी कि हाँ देयर आर वन एसक्यूएल क्वेरीज हैज बीन एग्जीक्यूटेड. इसके कुछ फंक्शंस भी होते हैं. तो देयर इज फंक्शन कॉल्ड एज गेट क्वेरीज. गेट क्वेरी विल गिव यू कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज हैज बीन यूज्ड. ये जो रिजल्ट आपको नजर आ रहा है ना, या नहीं, ये वन वन आउट ऑफ 100, 1 आउट ऑफ 100, तो उसका एक फंक्शन होता है गेट क्वेरीज. कितना सीपीयू का कितना टाइम एग्जीक्यूट किया है. ठीक है. उसने कितना रिजल्ट दिया है क्वेरी ने. जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, 4 आउट ऑफ 5000, वो. तो उसके लिए ये जो रिजल्ट है वो इस फंक्शन से आता है. ठीक है. एंड नंबर ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट अभी तो हमने यूज ही नहीं करे हैं. नंबर ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट हमने यूज नहीं किया. यहाँ लिखे ना डीएमएल स्टेटमेंट 0 आउट ऑफ 150, तो उसके लिए ये फंक्शन होता है. तो बस एक एग्जाम्पल काफी है इसको समझने के लिए. ठीक है. एक एग्जांपल से आपको पूरा समझ में आया कि वॉट एवर यू आर सीइंग ओवर हियर, ये जो वैल्यूज आपको नजर आ रही है ना, ये सारी वैल्यूज, दिस होल वैल्यूज, ये पूरी पूरी वैल्यूज, इनके लिए भी एक फंक्शन होता है. और वो फंक्शन यहाँ पर मैंने कुछ लिख के दिए आपको. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, गेट द रिकॉर्ड क्वेरीज. ठीक है. इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं.
सबसे पहले अकाउंट में 35 रिकॉर्ड्स है। कितनी एसक्यूएल क्वेरीज यूज हुई? एक। सीपीयू टाइम 8 मिली सेकेंड्स। ठीक है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड, सीपीयू बर्स्ट टाइम बोलते हैं उसको। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक रिसीव किया है, मतलब एक रिकॉर्ड रिट्रीव हुआ है। टेबल कितनी यूज हुई है? 0। तो वही चीज है जो आप यहाँ पर देखते हो ना, वही चीज, उसी के ये फंक्शंस है, उसी के ये फंक्शंस है बेसिकली। नंबर ऑफ एसक्यूएल क्वेरी, सीपीयू बर्स्ट टाइम, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, रो रिकॉर्ड जो नीला है वो। तो उसके लिए बेसिकली ना एक एग्जांपल लेना, ये उसी मकसद से लिया कि आपको ये थोड़े बहुत फंक्शंस पता चले। गेट क्वेरीज क्या देता है आपको, गेट सीपीयू टाइम क्या देता है, गेट क्वेरीज रोज क्या देता है, गेट डीएमएल स्टेटमेंट फंक्शन क्या देता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। ठीक है, गो विद दिस, go with this. Tomorrow morning you're also having a class, same time 8 a.m. 8 a.m. tomorrow morning I'm going to start with relationship queries. ठीक है, तो मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर देता हूँ, अगर बाय द वे कुछ लोग आज एब्सेंट हैं क्लास में तो उनको भी पता रहे। Tomorrow morning we are going to start with the relationship queries. ठीक है, do the practice on this, and I need to go somewhere, that's why I'm stopping this session.